Hello friends, my name is Rajan. Thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है वीडियोस बनाता हूँ फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे, और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ पहले मैं उसको हिंदी लैंग्वेज में बोलता हूँ, फिर सेम कंटेंट को मैं इंग्लिश में दोहराता हूँ ताकि आपको फ्री में फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स तो मिले ही, साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने का भी एक मौका मिले। So guys, like you know, I make videos on flirting and dating tips, and besides teaching you flirting and dating tips for free, I make it a point to deliver the content first in Hindi language, then I follow it up in English language, in order for you to learn spoken English as well as teaching you flirting and dating tips for free. So without further ado, let's get first started in Hindi language. चलो दोस्तों पहले हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं ना। सो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो एक तरीके से एक मिथ बस्टर भी है, यानी कि एक मिथक तोड़ने वाला वीडियो है। तो जैसे कि आपको मालूम है आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि फेयरनेस क्रीम, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, और उनका बड़े हाई लेवल का प्रमोशन हो रहा है, उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रचार हो रहा है। तो उन सब में कितनी सच्चाई है वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं और कैसे हम इसको फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स से रिलेट करें। तो आमतौर पर हम लोगों को दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि कैसे हम लोग फेयरनेस क्रीम अगर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। भला बुढ़ापे को आज तक कौन रोक पाया है। और सेम इज़ द केस विद परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि अगर हम डिओड्रेंट का छिड़काव करेंगे, परफ्यूम का छिड़काव करेंगे तो हाँ उससे ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में बदबू ना आए, थोड़ी देर के लिए बदबू चली जाए, लेकिन उसमें ऐसे प्रमोशन दिखाते हैं उसका कि जैसे कि उसकी खुशबू से लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम परफ्यूम ना लगाएं तो लड़कियां हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। जी हाँ। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट है, और मैंने अपना खुद का भी रिसर्च किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया मेरे उस सर्वे के हिसाब से कि जो लड़के डिओड्रेंट नहीं लगाते हैं तो लड़कियां उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं बजाय उसकी जो डिओड्रेंट लगाते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला एक्चुअली क्या होता है, जो लड़के परफ्यूम नहीं लगाते हैं तो और बजाय उसके जो परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो लोग परफ्यूम नहीं लगाते हैं उससे क्या होता है, अगर लड़कियां उनकी पसीने की स्मेल सूंघे तो उनके एक टिश्यू होता है ब्रेन में, तो वो जो टिश्यू होता है वो रिलीज़ करता है डोपामिन नाम का एक केमिकल। तो वो जो केमिकल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन मेल के, तो ऐसे फीमेल में भी एक सेक्स हार्मोन्स होता है जो उनकी ग्रोथ और उनके जो बॉडी पार्ट सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनको ठीक रखने में, बड़ा करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो ये दो फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज़ होते हैं। तो उसका रीज़न है कि जो पसीने की स्मेल होती है वो ट्रिगर करती है आपके ब्रेन में, वो टिश्यूज़ में, फिर वो डोपामिन निकलता है, डोपामिन से फिर सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन अगर आप परफ्यूम लगाओगे तो फिर वो डोपामिन ट्रिगर ही नहीं होएगा। तो यही मेन रीज़न है कि जो लड़के परफ्यूम लगाते हैं उनसे सेक्सुअली लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती। साइंटिफिक अगर हम बात करें तो बहुत ही सही उसने मुझे बताया। तो मैंने सोचा हाँ यार इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, है ना, और ये रियलिटी है। और इस सर्वे में ना एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सामने आई है कि जो लेडीज़ या जो लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं जैसे कि आईपीएल, मालाडी, तो उनमें ये थ्योरी परफ्यूम की काम नहीं करती है। परफ्यूम लो या पसीने की खुशबू सूंघो या बदबू सूंघो, काम नहीं करती। एक्चुअली क्या डोपामिन ट्रिगर ही नहीं होता ना उनके ब्रेन में। तो सब डोपामिन का खेल है जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं लड़कों पे। तो इसीलिए स्मेल का खेल है सभी। तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी पार्टनर है, आपकी वाइफ है, तो उसको आप बोलो भाई ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है लेने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगर आप ले लेती हो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो आप।
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात मैंने बता दी आपको कि ये परफ्यूम जो लोग लगाते हैं वो सब पाखंड है, उससे कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, परफ्यूम नहीं लगाना है ताकि लड़कियां आपकी पसीने की स्मेल सूंघे और अट्रैक्ट हो सकें। बाकी वो मैंने बता ही दिया आपको कि जो लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं आईपीएल, तो उनमें ये थ्योरी काम नहीं करती। तो आज के वीडियो में ही बताना था मुझे। तो कमेंट करके बताओ दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है ना। अभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बनाता हूँ सेम वीडियो। So guys, first thing first, in this video I'll be discussing about some myths prevailing in our society regarding usage of certain products, some cosmetic products like fairness cream, deodorants and perfumes among others. So actually today's video is going to be a mythbuster video. So if we talk about some Bollywood celebrities and so-called influencers, they kind of do it for the sake of money. You have to understand it. So they are endorsing these products, and in fact they go out of the way to promote it. For instance, in the advertisement of the fairness cream, the so-called celebrities endorse it like there won't be any wrinkles on your face if you use this fairness cream and you will become fair. In fact, they go out of the way and tell that by using it you will remain youthful throughout your life and you can reverse your aging, which is absolutely incorrect. Nobody can stop the aging as a process. And in a similar way, they are endorsing the perfume and deodorant. In fact, perfume and deodorant market is way too big, and they are projecting it as that the smell of deodorant and perfumes will attract all the women surrounding you, and which is totally incorrect. In fact, the opposite is true, because once I was sitting with my friend who is a doctor, sexologist, so he only told me. Besides this, I also did my own research, and in that research survey which I conducted, I found out that the girls who are smelling the sweat of men gets more sexually aroused than the girls who are smelling the perfume. And the scientific reason my friend who is a doctor who told me was that the smell of sweat kinds of trigger the tissues in your brain, and that releases the dopamine. It's a chemical substance which is responsible for the release of the sexual hormones. For example, the sexual hormone in men is testosterone, and in a similar way, the sex hormone in females, which is responsible for their growth of the sexual part, is progesterone and estrogen. So it kinds of instigate these hormones, and so the girl gets attracted to the men basically. So in my opinion, you should never apply these deodorants and perfumes. And in the survey, one more interesting thing came out, and it was that the girls who are using the contraceptive pills like IPL and Maladi, so they were not susceptible to this perfume theory, because the perfume itself, substance, cannot do that chemical reaction, and it doesn't triggers your brain, and consequently the dopamine, which is responsible for the attraction of between male and female. So you should, in fact, if you have any girlfriend or your partner or anyone female and you are a well-wisher of her, so suggest her not to use those contraceptive pills, because they are not good for female health and they should avoid taking it. I know it could be quite challenging, because these contraceptive pills are made to avoid pregnancy,
but they can look for some other products, or they can look for some other alternative to the contraceptive pills. So this was the information I wanted to give you in my today's video. So guys, comment me below how was today's video. I'll keep coming with some more informative videos and the tips, dating tips. So comment me below how was today's video. Till then, take care and goodbye. See you next time.